तो यहाँ पर हमें हुआ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वी कैन नॉट। तो फाइनली हमको एक मस्त स्पॉट मिला है बैठने के लिए जहाँ जनाब बैठी हुई हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव ओवर हियर। द डैम एंट्री इज क्लोज्ड एंड वी गॉट टू नो दैट इट इज क्लोज्ड मोस्ट। ऑल राइट, तो अभी हम बेंगलोर से आगे अराउंड 50 किलोमीटर दूर, और मंचबेले जो डैम है वो यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर और है, और हमने यहाँ रास्ते में विराम लिया है। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल सीनिक व्यू अराउंड। और हमारे साथ एक कैमरामैन आई हुई हैं, कैमरा वूमेन। तो आपको मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक पूरा ग्रीनरी एंड ऑल। तो आपने क्या ग्रीनरी फर्स्ट टाइम देखी है क्या? Didn't expect this from Bangalore. अच्छा। Yeah, because I'm from Northeast, so there we live in a lot of greenery. So being exposed to this much of greenery, it's like feeling back like I'm in home. Cool. Nice to hear that. आप इतना क्यों हंस रही हैं? क्योंकि हम हंसमुख हैं। तो शायद यहाँ रास्ते में रोड वगैरह टूटी हुई है, सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू कम हियर। So once you reach, this is the parking area. Like there's the car parking, this is the bike parking, and you go straight from here. This is the road that got broken, and people are taking bath, enjoying over here. But to have the proper dam view, I think we have to go straight from that side. When you take this route, can you see this? So be very careful. तो आपको अपने यहाँ शूज निकालने पड़ेंगे because we have to cross this water body. देखिए हमारी मुलाकात हमारे बचपन के दोस्त बिल्लू से हुई है। बिल्लू आजकल अपने ही ख्यालों में खोए खोए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। काफ़ी उदास लग रहा है वैसे हमको ये, लेकिन चलते हैं भाई। डरो बहन से। भाई बंदर ने मुझे काटा बचपन में बहुत। ओहो, तभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। अरे बंदरों जैसी। अरे इस तरीके के कमेंट करते शर्म नहीं आती आपको? शर्म तुम कानपुरिया। तो यहाँ पर हमें हुआ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वी कैन नॉट गो फॉर द डैम व्यू जो कि वहाँ ऊपर से है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। See, we thought we'll explore this area. So as you can see this road, so this road comes on the parking side, and that's where you have to come down, and you have to take this road that goes towards the Manchanbele Dam. This is the best view you can get. और व्यू में बकरियां मिल रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये क्रॉस करते हुए उस तरफ जाएंगे, and maybe we'll find a spot. So this area is full of stones. So while you're walking, I'll give you one tip. Make sure you find a very flat area, get a good grip like this, and then you walk one step at a time. This is the riskiest part of crossing this whole damn thing. Be very careful because its flow is little high and it's slippery as well. तो जनाब यहाँ मैडम कुछ घर से बना कर लाई हैं अपने, कुछ पैनकेक, और यहाँ पर है फ्रूट्स भी हमारे पास, हेल्दी फूड। और ये है हमारा व्यू। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर मंचबेले डैम, मेक श्योर दिस इज़ व्हाट यू गेट द बेस्ट। ये व्यू और ये यहाँ की नदी और थोड़ा सा एडवेंचर। This is chocolate pancake. Okay, I hope it's good. It is. The greatest chef in this world made it. अरे So we'll do some honey tonic and then have the pancake. papaya, spoon and the view. Don't. Hey, Oi.
Hook up. Hook. Come here. तो यहाँ 5 मिनट खाना वाना खाने के बाद नाउ वी आर गोइंग बैक बिकॉज वी नेवर नो कब वहाँ का पानी छोड़ दे डैम का एंड इट्स वेरी रिस्की आई फील. So it's best like to come early so that you can, you know, have your picnic and then go back. Yeah. But like it's already late, so we are not aware when the water will be. But still it's risky whether you come early or late, right? This is not a very safe place to party. We have come to Manchanbele Dam, but it did not come to our, match our expectations. So normally what happens when you think about this dam, you Google about it and you then realize, okay, a lot of good pictures are there. And then you come with that expectations. But when we came here today, the dam entry is closed and we got to know that it is closed most of the time. So if you're coming here, you probably will not get a chance to view the dam view. What you get this dam view. Basically, this is what the best you get out of this place. And also, I'll tell you one fact that around 400 people have died. 400 people is a huge number that have died at this place. It's not very safe. So what I feel mostly happens is people come for the dam view, and instead of, because entry is closed, so they come and they hike over somewhere here, and then they leave the water, because you never know when they can leave the water, and that's how the deaths have been happened. So I'll say that this place is not that good as you're expecting, but yeah, maybe if you have not come here, you can come with your friends, but just be a little careful because that road is broken and you have to cross this watery place. So yeah, so out of 10, what do you think, Ivy? How many? I think I would give 5. 5, huh? Yeah. Out of 10 you're giving 5. I think I'll give it 4. 1. Hindi 1. Huh. That piece. Oh. So yes, you can pay by cash also and also by Google Pay. They have it there. So this fish is how much? It costs around 50 rupees. So बताइए मैडम कैसा है? How is it? It's good. It's good, huh? Yeah, it's good. Is it fresh? Yeah. Okay, folks. Fish. So if you are coming here, I think this is the best thing. This is the best thing you can have over here. So yeah, try fish. देखिए इस ब्रिज की खस्ता हालत. तो देखिए जनाब, काफ़ी संभल कर आइए. यहाँ पर घुस गए तो फिर दुर्घटना हो सकती है. अभी जनाब ही घुसने वाली थी इसके अंदर. तो फाइनली हमको एक मस्त स्पॉट मिला है बैठने के लिए, जहाँ जनाब बैठी हुई हैं. तो यहाँ पर ऐसे कुछ फिक्स स्पॉट्स नहीं है, बट व्हेन यू जस्ट रोम अराउंड यू विल फाइंड प्लेसेस जहाँ में ऐसे यहाँ जगह मिली है. यहाँ बढ़िया पानी में आप पैर डालकर सुकून से बैठ सकते हैं.